ज़्यादा serious मा गई थी. Take it easy. R1 dot as क्या paper है ये show roll number हाँ show R. ये किसने hash code दे मिस ये क्या क्या किसने क्या hash code दे मिस आई मान लियो कैसे so where from it came because super daddy is object he is sending those things. Do you understand? Okay, now look here. Because R1 dot show n, but remember one thing, this is the Saffola diverted our concept like this. Otherwise, we can actually get all the three things from the reg student only. We do not need to have show R here, show n here, and so on. We can simply keep a one function called show here and access all the three, because all of the three are here, right? Because this reg student has all the three things, so we can have here show and we here return or print. We can directly print the name, roll number, and attendance. Okay, but we can, it is better to have intizam for the name in that class only. Okay, because it becomes very simple. This is the actual way to do that, not that way. Put up show everything here. Because why? Because tomorrow person class may have 10 fields. This student class may have 20 fields. Now this has its own fields. Now it becomes all jumbled. So that is why it is better to whatever here in the person class is, either I want to print it, either I want to assign it, either I want to do it, set data for it, do it from here only. Okay, because if there are 10 things there, it will become much easier to deal with them in that block only, because keep that block only for those data only. Okay, then everything goes inherited. वो उसका भी है. जैसे ये function मैंने इस name के लिए लिखी और ये method जो है ये इस बंदे का भी है. So using its object R1, I can access everything. But I have to do here what? System.out.println. सर अगर डेटा एलिमेंट्स प्राइवेट रखेंगे तो मतलब स्टिल प्योर फंक्शन मतलब ये फिर मतलब ये करना सारी चीज बस फॉलो अगर से ये थो तेलमा कैसे हैं तेलमा सुगस्टन अगर से प्राइवेट थो सुमा कैसे कुछ ना डेटा पार्ट यो क्या इतना पत फंक्शन से एक्सेस करा. यस राइट दैट इज द वे एक्चुअली टू डू दैट. बेसिकली क्लास में हम ऐसे ही करते हैं. डेटा पार्ट हम प्राइवेट रखेंगे और मेथड देंगे जो उसको अब जिसको उसके मेथड को पता होगा वही वो बंदा एक्सेस कर सकता है. दैट इज व्हाई वी हैव प्राइवेट टू वी हैव टू डू दैट वे ओनली. दैट इज द एक्चुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स. सर विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम हेकवस असम कॉल करित ऑब्जेक्ट नाम वरै किथन करो कॉल ती छुस बोना मतलब बुझुस करान तिम फंक्शन कॉल येल में इनहेरिट गई लास्ट किस क्लास में मैं ऑब्जेक्ट बनो. यस विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट बहका मतलब क्लास पर्सन छु अगर न च R1 बनो ना सुगो अलग चीज स्टैटिक गस त क्लास नेम थ्रो सो पत मगर क्वेश्चन इज R1 बनावा किहिन ठीक है हम कतन वजूदस में ऑब्जेक्ट बनावा किहिन R1 बनो च कोर न खड़ ही R1 ऑब्जेक्ट यानी कि रेफरेंस वेरिएबल छ R1 मगर ऑब्जेक्ट बनो ना यपर कि अमुक ठीक मैं सपोज मैं बनो ते ऑब्जेक्ट हम बने ते मतलब वन छुस मगर थ्रो ऑब्जेक्ट करन कॉल क्या कि ना फंक्शन हुत क्लासस में हां तत में का वे विदाउट कॉलिंग मतलब मैं करन हुत सिट सब एम कर ये ना मतलब ये पनिस क्लास पर्सनस में ते ये एक्स यात में स्टूडेंटस में. यस बुश हेका कर कुन किन मतलब कॉल पर्सन किस यात कर बा एग्जीक्यूट विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट R1 वरै ना गोट समझ ये कथ कि युस शो एन तो शो आर या शो एट ना करान यह यम सिंदिस कॉल करान क्या यह करान यम सिंदिस कॉल कम सिंदिस ती छुस बना मतलब सोच में पता मतलब सर क्या कि गोट समझ ना गोट समझ कथ युस यमिस रेग स्टूडेंट ना हो शो वचम यमिस मन तमिस पान तिमन पान सो अलग चीज अगर फॉर एग्जांपल बनाव स्टैटिक मेथड क्या बनाव
अगर ये बना बस static method for example तेल हेकु so हेको we अस करित using the class name so मगर सो छन yem sins क्या static गस्न तेल ये क्या extend गस्न सो क्या ना ना गुड बोज में अब किसना मैं छु static method show r to static method ठीक है मैं के show r अस करी direct call में using the student name मगर युस बह ये show r छु ना इतन call करा युस नु मैं yem sins show r call करा क्या युस करा मैं copy of युस yem sins करा call yem sins युस yem sins सो तरह समझ क्या कि ऑब्जेक्ट नेम कोर ना एमी ऑब्जेक्ट क्यू एमी क्लास ऑब्जेक्ट मतलब एमसी छु ये दिमाग में थाउन कि शो आर तुम हुम सिंस कॉल करा के ये पानी नहीं टीम्स करा ना सो तोर सब बुछ ना मतलब मियोन क्वेश्चन उस ये बुछ ना हुमिच है क्या कॉल गसित क्या के सी प्लस प्लस मज क्या है कि कॉल गसित क्या के तात छना अगर स्टैटिक बनाओ सो हेको इस कॉल करित या तम ऑब्जेक्ट बनाओ अलग गस फॉर एग्जांपल सो करो तम सिन ऑब्जेक्ट से कॉल खुद लिखा सो क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर तो बेस लगावा ये फंक्शन नाम सो करा सो डायरेक्टली तम क्लास एक्सेस तस ना पेवा स्टैटिक थावन ना पेवा ऑब्जेक्ट बनाओ राइट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर उस करा स्कोप रेजोल्यूशन ये चुन तिकस किन अगर मैं हक से एक्सेस करित अगर ये चीज से करून एक्सेस कुस यमिश फंक्शन मतलब क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर उस करा क्लास नेम करा उस मगर गसी ना उस क्रिएट कोरमुत C++ में ये ना बनाओ मतलब मे ऑब्जेक्ट बनोमुत लास्ट क्लासुक मगर बिस्ना ना C++ अगर से गसक तति गसी ना गोड ऑब्जेक्ट आसुन पत छु स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मानी सिर्फ से ये केमिश मेथड छु अगर से कंफ्यूजन छु गसान तति स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का तितु यो तति सुवानी ये केमिश ये अगर ये होम्युक नि ये क्लास सुमा कर एक्सेस क्लास नाम दिवान क्लास नाम दिख सुवानी सिर्फ सु लगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ततन एम्बिग्यूटी आइस कि ये येमुक मेथड किन होम्युक अगर कंफ्यूजन छु सर और वो मल्टीपल इनहेरिटेंस में लगता है नहीं पहले स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर अगर ये बात कर रहा है ना कि मतलब जगह ना तो C++ में उसके लिए भी ऑब्जेक्ट बन्योमुत होना चाहिए ऑब्जेक्ट गस आसुन क्रिएट गोमुत तोति तति कांसेप्ट इज सेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर छु ओनली ये इंस्टेंस आसन क्रिएट गेमस तम पथ कोस क्लास नेम इंस्टेंस क्रिएट इंस्टेंस जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वहां काम करता है वो सिर्फ ये काम करता है कि एम्बिग्यूटी दूर करने के लिए कि भाई ये इस क्लास के नहीं इस क्लास की है सर बुछना बदल चीज मतलब जान छना शो और this is confusion that baras में इससे वना छु ना ये चवनी होत हुनी we have a little confusion for that कि C++ में ते गस गोड आसन इंस्टेंस क्रिएट गमुत सो तो तम है कि स्टैटिक अगर स्टैटिक आसी स्टैटिक योत है कि यूजिंग द क्लास नेम एक्सेस गसित विदाउट ऑब्जेक्ट समझे मा चाहे सो C++ या जावा आसन only if you do not want to create an instance and you have a static variables or methods or whatever they can be accessed with the class name without creating an object क्याज कि ताछु static अंदर आइसे कंपाइल तमिसान बनोमुत सु छु पाने आसान ऑब्जेक्ट तम बनोमुत तो छ ऑब्जेक्ट बन्योमुत ठीक छै तमिक छ सु static variable छ आसान बन्योमुत अस मगर युस ये छु इंस्टेंस अगर ना आइस क्रिएट गमस किहिन सु हेक ने एक्सेस गसित C++ आइसन या जावा आइसन सु हेक ने एक्सेस गसित किहिन Okay. Okay, I have to give new class and you have Shafa sir's class. Then we should source में तो दूनी दाई त्रेजियाल. Anyways, if I give it a go now, it will show us all the three. Okay. Console just sorry. Let us see it. It is showing that. Okay. Sajid Sabah wine. Zara give me one screenshot. Okay. Before I give screenshot, let me give a little explanation of it. So what I am saying is technically is you should remember that this is my driver class तो छोड़ो आप जब आपने इसको create किया किसको reg student को it created a reg student ठीक है ध्यान से देखो सारे ये last की explanation इसकी जिसको थोड़ा confusions है so you created it using the some like ऊपर हमने किया of type reg student I created R1 equals to new and I called this constructor that is reg student and I sent three things to it. I sent Junaid to it in double quotes. Then I said roll number and I said attendance. And this thing is calling this thing and it is trying to create this object and this object is created. Attendance is created, variable is created, but what is being to be inherited is not yet there. That is why you create a super call
and this super call is called to the parent class. This one, it is called to the parent class constructor. That is why if I'm sending two things out of this n and r, and 80 is, I will assign to the attendance, but first this n and r will go to the super class here and here, and then before it assigns r to its roll number, it is calling its parent class. This goes to the up and calls its parent class. So super is calling the parent class constructor. Okay, na? So when you call that parent class constructor, it is actually creating that, and is creating that object, and now roll number is in vogue, and before it assigns this r to roll number, it is creating the parent class, okay, the person class, and creating there the name and all, and assigning the name to it. Then it comes back here, assigns r to roll number, then comes back here, assigns 80 to the attendance. And it has all these methods also, show r, show n, and show 80. All of the three things will come here. They're all here. Okay, इनकी अपनी कॉपी है, वो अलग है. ये show r जो इसके पास है वो अलग है. फर्ज कीजिए आपने इस स्टूडेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना, तो वो अपने show r को कॉल कर सकता है, वो इसके show r को कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि जो ये show r अभी हम कॉल कर रहे हैं वो इधर आया है. show r भी, show it भी, and that thing we then called using the r1's object. We say r1 dot show r and so on. ठीक है ना? This is small r. Does it make sense what I'm saying? Any questions? Everybody will open up the camera so that I can take one nice picture for memories. Saifullah and Shahid Hamid, please open the cam. Uzair Kadir, show your face. Uzair Kadir, show your face. Shahid Hamid sir, camera go off. Uzair Kadir go chai and be me mas. Uzair Kadir, show your face. Uzair Kadir go chai and it's FN and print screen. And we go to the paint. Anybody having any questions? Askal Jyoti, why is sawal prasan? That is really nice. I like Saifullah on the sawal prasan. That Shahid Sabah also cover कर देना. थोड़ा इस मगर इशू पेंट ही कैसा control V. तू क्या पेंटस मस करा? हाँ? पेंटस मस क्या तू गसा? Screenshot था आप बगर से बे के तामस तो. अब विंडोज की सूचना गसन शो विंडोज की F9 तो प्रिंट स्क्रीन ना शो दी गसन स्क्रीनशॉट हम. Screenshots में. क्या Windows की? तो चुना फंक्शन की थी पे विंडोज की F9 तो प्रिंट स्क्रीन. Windows की F9 and print screen तीनों. FM Windows Shift S. ऐसे black की तो सारे उंगली था नहीं इस पे. Windows Shift ते S ते चुका था. माशे खरीज उंगली ते इस्तेमाल करें का अच्छे ऐसे क्या हो रहा है जुसे? विंडोज की FN चना सा फंक्शन FN is FN तो प्रिंट स्क्रीन. Windows की FN प्रिंट स्क्रीन. अच्छा प्रिंट मैं तो सोच F9 थी मना. आज पता नहीं किन को नहीं आता. तातक न बकरित किन. Windows Shift and S. Windows की Shift S. Screenshot. चुन माने नहीं. Nothing. आन क्या था माँ गो? गोवा क्या था? शना select करूँ तो go. Full snip. या ये सैम महंगे जाके तो था भाई. Anyways, thank you. हाँ. चलो see you tomorrow इंशाल्लाह ताला. पगमा पे आज गसुन college. उस आज ते आई call मगर basically उसमें cousin थोड़ा ये next door ना ही मंत्रा COVID. इसलिए उस वक्त मैं तो self quarantine. तो बस अब आया self quarantine. तो class से दिमो नत गैस miss. So tomorrow I don't know, maybe I have to go, then I will tell you. But class will be there. It may go after 4 or something. Be ready, okay? ठीक है? Yes sir. अगर इस class पर पगा दिमो चीर, say around 6 or something like that. Are you comfortable in that? मुश्किलात ही पामत छस. क्या जी? चीर क्या problem है? सत्ता जो वायरा मुश्किल. चल को कर दर बिशे करो छुट्टी है. चलो okay. Okay, Allah. I will inform you guys. Okay, sir. Thank you so much. ये तो भाग ही नहीं रहा.